Hello everyone. So we'll wait for 5 to 10 minutes and let others join and then we'll start. मदर जो समझ रहा है वो यार कुछ हम प्रिपेयर भी नहीं करते हैं।
Good evening, everyone. Good evening, Professor. First, let me introduce you and today's topic. So, good evening, everyone. Thank you for joining this session in a short period of notice. I guarantee this would be a really fruitful session. Defense and strategic studies is also known by various other names like military studies, military science, war, and national security studies, etc. This field of study is interdisciplinary, and hence this discussion will be important for all those people who are pursuing their study or are interested in different aspects like aspects of geopolitics, military geography, science and technology, economics in defense, conflict management, and conflict resolution. Rest to talk about different aspects and role of military and strategic studies in India, I welcome Dr. Pooja Bhatt. She did her PhD from JNU. She has a wide area of experience in this domain. She also taught in Rastriya Raksha University. When she was a research associate at Center for Air Power Studies, New Delhi, her research project on Nine Dash Line, the contested waters of the South China Sea, was released by Air Chief Marshal RKS Bhadauria in January 2020. I welcome her for this discussion. Over to you, ma'am. Hello, good evening, everyone, and I'm sorry to start late for today's session and also for postponing the session. We were supposed to do it earlier. But thank you very much for joining us for today evening for this session, and thank you so much for research collaboration as well as other organizers for having me for this talk. I just want to know, are we comfortable in English और मैं हिंदी और English दोनों का मतलब mix करके lecture दूँ? I just wanted to start that first. All right. So Ma'am, go ahead with bilingual. हाँ, so एक काम करते हैं बिकॉज डिफेंस स्ट्रैटेजी के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं जो कंसेप्ट हैं वो इंग्लिश में हैं बट मैं कोशिश करूँगी ज़्यादातर हिंदी यूज़ करें सो दैट सबको ही समझ में आए सबको ही हिंदी आती है सो और अपार्ट फ्रॉम द कंसेप्ट मैं बाकी सब हिंदी में रखूँगी अच्छा दूसरी चीज़ मुझे आप लोगों से पूछना है कि हम पीपीटी से करना चाहते हैं कि आयु मैं वर्बैटिम बोलूँ व्हाट इज़ मोर कंफर्टेबल आपको जो फॉर्मेट कंफर्टेबल होगा हम उस हिसाब से कर सकते हैं if you want to go by a PPT, I'm good showing a PPT and talk about it. In case you want me to go verbatim on the topic, we are happy doing that also. I just want to know beforehand so that largely हमारा जो जो भी audience है वो किस में comfortable रहेगी. Ma'am, I think PPT will help people to understand it better. All right, so give me a sec. I'll just join again with another PPT. Just give me a sec. भाई हो गया अपना काम हाँ? हो गया अब आप खेलो जो खेलना है All right. Meanwhile, I'm just connecting my PPT to the presentation. I just wanted to start with the fact that defense and strategic studies per se.
and also the research methodology. We are trying to cover two topics today, and for that I'll require around 20-25 minutes. And once I am done presenting, we can have a question answer round. And जैसे भी आपको I think we'll go for half an hour more for the question answers, and that way we can go ahead with discussion. Is my screen visible? Yes, Sorry, ma'am, ma'am, it's is my visible. screen visible? Yes, ma'am, it is visible. Is my screen visible? Yes, ma'am, it is visible. Um, Shubham, is my screen visible? Can you hear me? Yes, ma'am, it is visible. We can hear you. Shubham, is my screen visible? Yes, Professor, your screen is visible. We can hear you. We And can see you. also, you can hear me? Okay, so Yes, yes, ma'am. I think I've just shared my entire screen. I'll just open up the, okay. Is the slide visible? Yes, ma'am, it is. All right. Okay, so we'll be covering two topics today, and this first in the first like 15 minutes, I'll cover up the issue of defense and strategic studies, and what is the scope of defense strategic studies in India, why and who should be studying about it, and what are the career prospects that we can look forward towards once we are done studying, defense strategic studies at bachelor's level, at master's level, and also for the further studies. Similarly, I will also talk about research methodology, a bit about it, और किस type, because हर एक subject में, हर एक discourse में अपनी research methodology अलग तरीके से हम यूज करते हैं. बेसिक सबके सेम होते हैं, और जैसे जैसे हम उनको यूज करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, वो उसको हम कस्टमाइज करते जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से. तो साइंस में जैसी आरएम यूज होगी, वैसी आरएम सोशल साइंस में नहीं यूज होगी. सिमिलरली कॉमर्स में कोई कॉमर्स रिलेटेड टॉपिक होगा, उसमें कोई और टाइप की आरएम होगी. सो जो हम बेसिकली आईआर डिफरेंट स्ट्रैटेजिक स्टडीज में जो आरएम यूज करते हैं, मैं पर्टिकुलरली उसके बारे में ही बात करूँगी. ओके, सो व्हाई डू वी वांट टू स्टडी डिफेंस स्ट्रैटेजिक स्टडीज? हम क्यों पढ़ते हैं, क्या महत्व है, क्यों कौन से टाइप के स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहली बात ये है कि एज द टाइम्स आर इम्प्रूविंग, जो आजकल की जनरेशन है, आजकल का टाइम है, वी डू नॉट गो फॉर ओनली वेरी बेसिक एरियाज टॉपिक्स. This is only science, only commerce, only arts. आजकल वो सब कंसेप्ट थोड़ा कम होता जा रहा है, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब लोग ग्रेजुएशन तक ये सब्जेक्ट पढ़ते थे एंड ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड करते थे कि उनको क्या फील्ड लेनी है. Now the generation like you is very advanced. More or less everyone now is aware. आप लोगों को पता होता है आप क्या किस चीज़ में ज़्यादा शौकीन है, आप स्कूल टाइम से उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. तो ये देखा गया है जनरली बाय 10th एंड 12th पीपल आर बेसिकली दे आर वेरी क्लियर कि उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन से एरिया में जाना है, उनको डिफेंस में जाना है, उनको क्या बोलते डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी करना है. बट बेसिकली पीपल नाउ आर मोर अवेयर ऑफ द career prospects. So, defense and strategic studies is a very niche subject. So, people who want to either get into armed forces, or they want to study more about how armed forces work, or how paramilitary forces work, or how national security issues work, they are the ones who should be and who would be joining defense and strategic studies. ठीक है, बहुत नीश सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत नीश टॉपिक होता है. तो जो नॉर्मल साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में पढ़ते हैं, उस टाइप के टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स आप नहीं पढ़ते हैं. बहुत पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जो आप पढ़ाई करते हैं उसमें. ठीक है, और इनका दूसरा फायदा ये होता है कि ये बहुत करियर ओरिएंटेड कोर्सेज हैं. डिफेंस स्ट्रैटेजिक इटसेल्फ इज अ वेरी करियर ओरिएंटेड, कि आप मतलब आपको इसके एंड पे
आप इतने तैयार हो जाते हो कि किसी पर्टिकुलर करियर पे आप चूज कर सकते हो। जैसे आप बैचलर्स लेवल तक अगर आप करते हो तो यू आर वेरी रेडी टू जॉइन either military forces or paramilitary forces, unrelated services। आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक करते हो, उसके बाद आपके पास और करियर अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अगर उसके आगे जाते हो फिर करियर अपॉर्चुनिटीज अलग हो जाती हैं। तो जैसे जैसे आप लेवल बढ़ता जाता है तो करियर अपॉर्चुनिटीज वैसे बहुत स्पेसिफिक अलग अलग बढ़ती जाती हैं। एंड सबसे लास्टली इम्पॉर्टेंट बात ये समझी गई है कि पहले ऐसा होता था कि आप अभी भी आप अगर आप देखेंगे न्यूज़ चैनल्स देखेंगे और आप बहुत सारे डिस्कशंस देखेंगे तो आप देखेंगे जनरली ये जो डिफेंस स्ट्रैटेजिक वाले इश्यूज होते हैं उसमें कोई रक्षा विशेषज्ञ बुलाया जाता है या सिक्योरिटी एक्सपर्ट बुलाया जाता है हु आर जनरली रिटायर्ड आर्म फोर्सेस पीपल, वो लोग बात करते हैं। अब ये समझ में धीरे धीरे समझा गया है कि डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज इज नॉट ओनली पर्टेनिंग टू पीपल हु आर इनटू द मिलिट्री सर्विसेज, क्योंकि उनका एक व्यू पॉइंट होता है। ठीक है, और जब हम पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से देखते हैं तो उसमें और नए एंगल ऐड हो जाते हैं। तो therefore it is very necessary to see the issues of national importance, of national and critical national security, to see it from both military point of view, from political point of view, and also from the geopolitical point of view। बिकॉज जो हमारे अराउंड सिर्फ हमारी कंट्री के अलावा भी बाकी कंट्रीज में जो हो रहा है उसका क्या हम पे इम्पैक्ट आता है, उसकी पढ़ाई करने की बहुत जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ ऑल ऑफ यू मस्ट बी फॉलोइंग अफगानिस्तान इशू एंड नाउ इंडिया इज इन अ फिक्स कि अफगानिस्तान इशू को कैसे डील किया जाए। बिकॉज अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों इम्पैक्ट हम पे पड़ता है। इंडिया के नेबरहुड पॉलिसी पे पड़ता है, इंडिया के खुद सिक्योरिटी पॉलिसीज पे पड़ता है, इंडिया का यूएन रिप्रेजेंटेशन पड़ता है। बिकॉज जब इंडिया यूएन में जाएगी इंडिया से पूछा जाएगा वेदर यू वांट टू जैसे तालिबान रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इंडिया को यूएन स्टेटस पे भी फर्क पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें जो होती है इम्पैक्ट करती हैं इंडिया की पोजिशन को। और therefore defense and strategic studies is very much designed to not only see the military issues but the domestic political issues and international global issues, whatever affects the security, national security of the country। ठीक है, so with this these are some of the examples which are generally taught in most of the courses defense strategic studies में bachelor's level में, master's level में and beyond, but these subjects are somewhat available in all the universities where it is taught, the course is taught। तो हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं, बहुत बेसिक कंसेप्ट थ्योरी बेस्ड स्टडी से, बिकॉज आप थ्योरी आपकी फाउंडेशन बनाता है। तो आप थ्योरीज में पढ़ेंगे कि वॉर के रिलेटेड क्या थ्योरीज हैं, इंडियन स्कॉलर्स ने, पुराने स्कॉलर्स ने बोला है, मीडियल स्कॉलर्स ने क्या बोला है, मॉडर्न स्कॉलर्स ने क्या बोला है। सिमिलरली हम बाकी कंट्रीज के स्कॉलर्स को पढ़ते हैं जिन्होंने वॉर के ऊपर अपने मतलब कोट्स दिए हैं, वॉर के ऊपर बुक्स लिखी है। तो बेसिकली इससे हमें कंसेप्ट से पता चलता है कि हाउ डिफरेंट कंट्रीज सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉर। कुछ कंट्रीज बोलती है कि वॉर का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए दुश्मन को खत्म करना, कुछ वो ऑफेंसिव टाइप का थ्योरीज हो गई। फिर कुछ कंट्रीज का कंसेप्ट होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉर करना, दैट इज वेरी डिफेंसिव वे ऑफ डूइंग वॉर। भैया मैं बहुत ब्रॉड वे में बता रही हूँ आपको, दीज एंड इसके रिलेटेड फिर थ्योरीज करते हैं बहुत। सिमिलरली नेशनल सिक्योरिटी के कंसेप्ट बहुत बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। वी विल सी राइट नाउ दैट मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट आर not properly used or loosely used in the newspaper in general discussions between people। जैसे सिंपल सा कंसेप्ट है क्वाड, क्वाड को हर कोई अपने तरीके से बना रहा है, जबकि क्वाड का अभी तो कंसेप्ट पूरा तैयार भी नहीं हुआ। इट इज समथिंग दैट वी आर सीइंग। क्वाड इज समथिंग, इंडो पैसिफिक इज समथिंग दैट वी आर लिविंग राइट नाउ एंड इट कैन बी कंपेयर्ड टू समथिंग विद द कोल्ड वॉर। जब कोल्ड वॉर चल रहा था नोबडी न्यू एग्जैक्टली क्या चल रहा है, सबकी अपनी थ्योरीज के कंसेप्ट थे। नाउ वंस अ कोल्ड वॉर duration is over, those 4-5 decades are over, now we can look back and say कि हाँ कोल्ड वॉर में बाइपोलैरिटी थी, कोल्ड वॉर में आइडियोलॉजिकल वॉर थी, कोल्ड वॉर में ये था वो। सो कंसेप्ट वाज देन it became more concrete। Similarly, right now, Quad Indo-Pacific is something which every country is trying to see it from their point of view। तो हर कोई अपने अपने व्यू से देखता है, अपना अपना उसको अपनी तरीके से नेशनल इंटरेस्ट में यूज करने की कोशिश करता है।
Therefore, the concepts such as these have to be very carefully used. Similarly, हम एक और बहुत बड़ी mistake करते हैं. We use alliance very military alliance very loosely. Military alliance has a very specific term. Alliance मतलब किसी की side ले लेना, मतलब एक तरफ हो जाना. तो India does not get it. For example, India की बता रही हूँ. India does not get into military alliance because of the non-alignment policy that we used to follow. We have continued that policy in a different way that we have our own sovereignty question in mind that किसी की साइड नहीं लेंगे हम पार्टनरशिप करेंगे मिलिट्री पार्टनरशिप होगी मिलिट्री अलायंस नहीं करेंगे तो इस टाइप के कंसेप्ट जो होते हैं ये पढ़ना समझना बहुत जरूरी है एंड देयरफॉर दीज आर द कंसेप्ट्स अप्रोचेस व्हिच आर टॉट इन नेशनल सिक्योरिटी सिमिलरली हम स्ट्रैटेजिक थॉट्स पढ़ते हैं जैसे इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो हम चाणक्य पढ़ेंगे ओल्ड में देन वील मिडीवल पढ़ेंगे फिर हम मॉडर्न में हम श्याम मानिक शॉ एंड अदर्स पढ़ेंगे तो इनके थॉट क्या थे वॉर के बारे में पीस को लेके वॉर कैसे कंडक्ट करनी चाहिए ये सब बहुत जानना जरूरी है बिकॉज एवरी कंट्री स्ट्रैटेजिक थॉट एक्चुअली इज सीन इन इट्स बिहेवियर एक्चुअल बिहेवियर जैसे इंडिया को बोलते हैं ना कि न्यूक्लियर वेपन क्यों नहीं यूज करता इंडिया मतलब क्या मुश्किल है न्यूक्लियर वेपन है तो हमारे पास बट हमारा स्ट्रैटेजिक थॉट वैसा नहीं है हम लोग न्यूक्लियर वेपन क्या बोलते किसी को डराने के लिए शो ऑफ करने के लिए नहीं रखा न्यूक्लियर वेपन का हमारा अपना पर्पज है हमें पता है न्यूक्लियर वेपन आर वेपन ऑफ डेटरेंस we cannot loosely use it we cannot have first use policy that's why we have second use no first use policies for nuclear weapon and we abide by it तो ये सब जो है जो हमने हमारे आजकल के कंसेप्ट्स है वो हमारे स्ट्रेटेजिक थॉट से डेवलप हुए सिमिलरली अगर यूएस को देखोगे तो उनका फर्स्ट यूज है उनका अपना स्ट्रेटेजिक थॉट है उनको लगता है न्यूक्लियर वेपन्स आर द वेपन्स जिनको हमको पहले यूज करना चाहिए क्योंकि जो पहले यूज करेगा वही वॉर जीतेगा और एक ही बार में खत्म हो जाएगी वॉर तो हमें उनका वो उस तरीके से उनका फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन तो इस टाइप के जो कंसेप्ट होते हैं इनको समझने के लिए स्ट्रेटेजिक थॉट की बहुत जरूरत है Similarly, I will not delve into each of the topics that are taught, but these are some common topics which you will study in most of the university teaching defense and strategic studies. Military psychology पढ़ेंगे, international law related to warfare पढ़ेंगे आप लोग, फिर defense acquisition कैसे होती है. One another topic which is coming very it's often and most of the universities are now offering is defense journalism. डिफेंस जर्नलिज्म समझा गया है कि अभी तक जो डिफेंस जर्नलिस्ट हैं उनकी बैकग्राउंड नहीं है डिफेंस में तो उनको कंसेप्ट समझ नहीं आते टॉपिक्स नहीं समझ में आते तो सिमिलरली वी विल हैव अ we will build a build up students build up scholars having knowledge of defense and related issues so that when they get into journalism they will have a right perspective of how to do the journalism ठीक है एंड सिमिलरली देन हर एक यूनिवर्सिटी ने अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया हुआ अपना अपना कोर्स तो नेशनल इश्यूज पढ़ाते हैं रीजनल इश्यूज पढ़ाते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पढ़ाते हैं बट मोर और लेस सबके पास ये सब कोर्सेज आपको मिल जाएंगे Okay, some of the universities I mentioned, I checked, they were like more around 20-25 universities offering defense and strategic studies at both undergraduate and postgraduate level, and some of them also offer at PhD level. तो इनका कुछ नाम मैंने आपके यहाँ पे मेंशन किए मैं आपका एरिया के हिसाब से जहाँ रहते हैं जहाँ से आपने कनेक्ट किया है आपके आसपास में जो यूनिवर्सिटीज है आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे दिस इज अ लॉन्गर लिस्ट ये बाकी ये जो 15-20 और यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे ये कोर्स ऑल अवेलेबल है डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक का कईयों में सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे है कईयों पे सिर्फ अंडर ग्रेजुएट पे है कईयों में दोनों है in I can share this PPT with the research collaboration where this is mentioned and they might share it with you or also you can just go on the online and you can check it for yourself of whichever university is nearer to you and more convenient to you in terms of location in terms of fee structure depending upon your own liking आप वहाँ पे apply कर सकते हो one of the private universities also I've recently found offering the defense strategic is MIT Noida. They also have a specific center where they teach you. The center is also called Center of Defense Strategic Studies, something like that. ऐसे और भी private universities. I was just preparing the database. अभी I'm still working on it.
So this is one of the universities. You can check other universities, also private universities, which are offering defense and strategic studies. So this is just to give an idea that this course is becoming so popular that not only public universities are doing it, but private universities are also doing offering this course. So till here I am audible, right? I just wanted to confirm if I'm audible to all. This is my habit doing it in the classes. Yes, ma'am. You are very Okay, much good. audible. Okay, good, good, good. I just keep checking on so that कई बार audio चला जाता है and I'm just speaking and the person आप लोग सुन नहीं पा रहे. Thank you so much. Okay, so now coming to what are the careers prospects? As I said in the very starting, uh, it has very niche career prospects. People who are very defense focused mindset from the very starting can go for it. So armed forces तो है ही जैसे जब तक आप you are in the age limit where you can apply for various armed forces, Indian army, navy, air force आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. तो दीज आर द ग्रेजुएशन लेवल तक. Even post graduation आप कर रहे होंगे, that time you are also eligible till that to do civil services also, because depending upon your age, depending upon your category and all that, civil services give you age limit till then for appearing. So when you are applying for civil services, defense and studies is not a subject in civil services, but IR is there, IR political science, and a lot of questions of international, national, domestic importance also appear for your civil services. So उसमें आपको बहुत फायदा हो जाता है उस टाइप से. Okay, apart from that, a lot of think tanks are also there. So I have also had experiences with think tank, and this is a very good career prospect. So I'll just take a minute to explain about how the what are think tanks and उनका job कैसा होता है और क्या उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल बता दूँगी आपको. Think tanks are basically research institutions where you read on the events and you build up you help building analysis. You write in your analysis pieces, you write in short format, long format, and these are generally analysis pieces which are given to the government or the higher authorities for their evaluation, for their public policy and international policies. तो थिंक टैंक्स का बेसिकली ये काम होता है, ये बहुत स्पेसिफिक जॉब है. It requires a lot of reading. So people who like to read a lot and write a lot uh, can and should apply for think tanks to work. Just like any other job, this also requires lot of time and energy to build to become that good. So अगर आप देखेंगे most of the international channels, so in national channels में देखेंगे lot of scholars would be appearing from think tanks also, उनके नाम वगैरह भी देखेंगे आप. So that is a higher level. When you become that good an analyst, उसमें अच्छा level पे पहुंच जाते हो. So that is the kind of representation you get. You are invited on TV to talk, and you're invited to international national conferences to talk, which is again a perk of join a think tank. But initially, like every other job, you have to struggle. You have to struggle in the sense you have to read a lot. Will have to write a lot. You will have to invite a lot of criticism for your work, because not everything you will like write would be as per everyone's liking. But this is your own perspective on what you want to write on particular issue. ठीक है. And कई कई लोग आपसे एग्री करेंगे, कई लोग एग्री नहीं करेंगे. So you have to keep an open mind whenever you will write. You will invite a lot of criticisms, and how good you are at taking criticism, revising it, not revising it, standing by your point कि भैया मैंने जो लिखा है, मैंने बोला है वो सही है, या अब okay, this point is valid, I can revise my argument like this and write again. So ये सब काम बहुत करना पड़ता है initially before you become that good in your topic in whichever area you want to write. For example, I write on maritime issues and regional security architecture, maybe ASEAN and Shanghai Cooperation Organization and all these regional organizations. So वो नहीं टॉपिक्स पे इनिशियली बहुत पढ़ के लिखना पड़ता है, फिर समझ में आता है कि हाँ ये दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर एरिया वर्क्स, इसलिए ऐसे काम होता है. And eventually, within few years, you develop your own niche way of writing and looking at things.
And that when that happens, you're generally graduated to a next level where you become an analyst. Till before that, you're just a researcher. You research on things, and when you reach a position where you write analysis pieces and invited to talk to conferences, news channels, that time you become an international scholar, analyst. That's all. It is a very, very paying job if you stay back with, because our personal experience, while being at think tank, I could travel the entire country, giving lectures all over the country, prominent lectures, all of them. I traveled a lot abroad also, and all the good conference on maritime security issues I could attend and speak there. So this happens when you stick back, think the think tank. So this is a very good career opportunity. Initially, it is not. It might not be a well-paying job like any other entry-level jobs that you get. But eventually, when you move ahead, everything improves for you in terms of career, the job prospects, in terms of salary packages, in terms of your other perks and remuneration. Everything improves. So this is something I wanted to. I can also answer some of the questions if you have later. बात कर सकते हैं इसके बारे में. Then another issue, area of career is defense journalism, where you can join हाँ newspapers, and right now a lot of online हाँ platforms have come जो defense journalism पे काम करते हैं. There are also news channels that which you can work. So wherever and even a lot of journals have come, and online offline magazines have come specifically on defense journalism. So you can join any of them, and they are also very rewarding career. Another upcoming area where a lot of defense strategic students are taken are DPSUs, defense public sector units like HAL, BHP, and all. So basically, they also want interdisciplinary approach to their organization. So they would want students to have a kind of background to defense and strategic studies, and so that they can bring So basically, all these DPSUs are having more of engineers. Engineers know how to build something and all that. We know the defense strategic studies students know that how a particular thing is required, not required, what is the response. जैसे फॉर एग्जांपल हम तेजस की बात करते हैं. तेजस में तेजस की बात करें तो they know how to build Tejas, like क्या revisions करने, but they do not know the political, domestic political and international political implications of it. That kind of perspective, a defense strategy student can bring. So this is another area that we can think of. Uh, Last is research and teaching. That is again from the, experience. I can tell you that being a PhD myself, people who want to go ahead after their masters to take specifically do research in the areas of defense and strategic studies, and there are so many of them. तो आप उसमें अपना एम फिल पी एच डी भी कर सकते, तो एम फिल वी डोंट नीड एनी मोर एम फिल, बट वी डिड एम फिल ऑल्सो. आप थीसिस लिख सकते हैं, आप पी एच डी कर सकते हैं, एंड देन यू कैन ऑल्सो गेट इन टू टीचिंग. Initially, net was required for teaching. I think now after 2019, we don't even need that. And all these universities coming up, there is no dearth of teaching opportunities also for defense strategic studies. So this is a career perspective. Now, very quickly, eligibility. Graduation के लिए any 12th pass stream, मतलब any from any stream, so there has to be only 12. You have to be 12th pass, and हर एक यूनिवर्सिटी का अपना मतलब पासिंग क्राइटेरिया होता है कुछ का. Generally 50 to 55% is the passing criteria that they're taking. Similarly, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी कोई भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट चल रहा है. बट इन दोनों में ये है कि entrance examinations, most of the universities are now taking entrance examination, and once you clear that, some universities have direct interviews also after that. Some universities go by just the merit list of your entrance examination, and then you can apply. So depending on each university, आप apply कर सकते हो. Uh, uh, so PhD के लिए of course you need a post graduation, preferably only in defense and strategic and IR studies, so that you know the theories of it, because PhD is a very time consuming 5-year topic.
sorry, research field. So you basically are only reading, writing, and for your PhD as well as you write on journals outside and related field. तो आप PhD भी कर सकते हैं. PhD के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत है. And if there are ex-servicemen, basically most of the ex-servicemen uh, and also people in service also can do PhD. So people who have done their masters during their service time, they can also apply for PhD directly. Okay, this was the roundup for my first part of the talk, which was about defense and strategic studies and scope. And I will leave you with this quote by Sham Manekshaw. And he very clearly says, and this quote actually, if you read this quote, I'll just give you a minute to read, and I'll tell you why I use this quote. So this quote tells a anguish actually of uh, Marshal Manekshaw. Um, he was very somewhere had this issue that our political masters this is not very true now anymore, but he just thought that during that time our political leadership does not understand concepts of war, that you would tell a person to go to a war, but there are so many other things involved with it, and maybe political leadership do not understand, we need to understand. This is the idea, but this also gives a very good picture that the issue of defense and strategic studies was at one point of time was so military ruled and focused that nobody outside understood it, and it was not their fault because only military people will know. So there is this growing conscience that if the issue is of military importance, if it is a national importance, if it is of national importance, then people also should understand this concept. This way, both will be at par. People will not have misinterpretations of the military related issues, war related issues. Similarly, military will also get a check and balance system from its political leadership as well as public who are aware of military concepts and how the wars are fought and won. So this was just to bring it at par so that military should not remain a domain of military people. Defense and strategic area should not remain a domain of military people. Even the political leadership, general, and the public at large, as well as a niche group of scholars should also understand about how defense and strategic studies work, how nations national security works, so that they can make informed comments about it. Because a lot of people who do not understand the concept, they will make very ill-informed comments, which in the end hurt the country's own security issues. So this was the first part, and if you have any questions about the first part, we can take it later once I'm done with the second part of the talk. Okay, my second part of the talk is about research methodology and why do we do research, why it is required to do research in IR and in defense strategic studies. So if you reflect back for a second, everything that you have studied since school has been researched at some point of time. आपने जो भी पढ़ा अपनी हिस्ट्री में, यहाँ मोहनजोदाड़ो में खुदाई हुई है, या इंडिया के शिप्स 100 BC में भी they used to go to, we had ships which used to go to several other continents. Yes, sir, this was called knowledge generation. Knowledge creation. Creation is only done by research. तो कोई भी नई knowledge जब create होती है उसके पीछे बहुत सारी research जाती है. So we become a niche group of people, the researchers and the scholars become a niche group of people who will create knowledge for other people. हमारा create किया हुआ research, हमारा create किया हुआ knowledge will be read by others. So that is itself is a very top level, very high level job to do, to create knowledge. To teach your knowledge is a different thing, but create a new knowledge which was not known earlier, available to people earlier is different
from everything else. And therefore, knowledge creation, knowledge generation is very important. uh, क्या होता है नॉलेज जनरेशन? नॉलेज जनरेशन जब हम किसी चीज़ के बारे में नई चीज़ें ढूंढते हैं, जैसे तो इतनी सारी हिस्ट्री की चीज़ें जो हमें नहीं पता। अभी रिसेंटली आई थिंक थोड़े दिन पहले साउथ इंडिया में वी कुड फाइंड civilization which was I think even earlier than Harappan culture. So that was a new knowledge created by archaeologists and historians, right? And this would be the knowledge would be studied by the future generations. So we find new avenues in our knowledge that was done by historians. Even people in other fields also create new avenues in knowledge. Other way of doing research is and purpose of research is to seek answers to new problems or already existing problems. कई problems ऐसी हैं जो अभी तक चलती आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आईआर की बात करेंगे, आईआर में कई प्रॉब्लम्स अभी तक चलती आ रही हैं, कई न्यू प्रॉब्लम्स हैं जिनके आंसर्स अभी तक सफिशिएंटली हमें नहीं मिले, तो वी कीप ऑन फाइंडिंग आंसर्स फॉर देम। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च. Also we try and create new knowledge in addition to this course which I just spoke about, कि मतलब हमें इतनी knowledge पता है, इसके आगे हम क्या जान सकते हैं. So these are the different reasons for why we create do research. And ये देखा गया है कि पहले बोला जाता है जैसे डिफरेंट स्ट्रैटेजिक स्टडीज इज समथिंग व्हिच इज मिक्स ऑफ बोथ साइंस एंड सोशल साइंस. Scientists used to take pride in their research work because their research was very much black and white. कुछ होता है या नहीं होता है, नो दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट. एसिड होता है, बेस होता है, ये फॉर एग्जाम्पल. But just social sciences, they are more subjective in its approach. The answers are not very black and white. Answers somewhere lying sometimes in gray. We need to find those answers within that gray. And that is the subjectiveness of any social sciences subject. But defense and strategy में there is an element of science because and objectivity, because we can take numbers and figures and case studies and use them, those subjective objective pieces, to do our subjective studies. So it is very interesting how we do research in IR and different scientific studies related issues. Okay, हम and what are the types of research outputs? तो क्या करते हैं research जब करते हैं जनरली किस टाइप से हैं? We write books. Books actually anything which is above 70,000 words or approximately 190 to 200 pages and above is considered as a book. So you can write an entire book on a research topic if you're finding. Similarly, we do a MPhil, PhD, and some universities write a dissertation also, where we do research and write down our research outputs and everything within 50 to 70,000 words. Similarly, there are other forms of writing. Issue briefs होता है, सबके word limit होती है. Journal papers में 8 से 10,000 words के होते हैं. Chapters लिखते हैं, वो किसी भी book के edited books होती है, इसमें आप देखेंगे different authors लिखेंगे, तो किसी में 5,000 word limit का होता है, किसी में 8,000 से 10 होता है, depending. Similarly, we write smaller pieces also. जैसे आप एनालिसिस पीसेस पढ़ते हैं जो मैगजीन्स वगैरह में पढ़ते हैं, तो दैट वुड बी एनीवेयर बिटवीन 3 to 5,000. देन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं जिसमें अगेन एनालिसिस होती है, दैट यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट विद इन 1,000 वर्ड. सो एवरी टाइप ऑफ राइटिंग रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ टैलेंट. किसी में आपको बहुत इलैबोरेट करके समझाना होता है, किसी में आपको कम शब्दों में अपनी बात बतानी होती है. So that is another learning process which you get during when you do research. Okay, how to say your argument, your thought in 70,000 words and make a similar argument in only 1,000 or less than 500 words. This is again an art of doing, and I will also take 5 minutes later to tell you how to do it also. Okay, so how do we go about doing a research and its presentation? This is common to all the subjects, including defense presentation. But I will take one minute for each to explain you how it is done. पहली चीज होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. किसी भी रिसर्च में आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पता हो, हम ढूंढ रहे हैं. अब ढूंढना सबसे इम्पोर्टेंट. Once you can find a question, you can write anything on it. But for question ढूंढना क्यों मुश्किल होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है? बिकॉज उसके लिए आपको पढ़ना बहुत पड़ता है. बिकॉज ऐसा होता है कई बार कोई क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है कि फॉर एग्जाम्पल
कोई भी जनरल, अगर आप डिफेंस रिलेटेड ले लोगे या कोई भी जनरल इशू ले लोगे कि पर्टिकुलर कंट्री ने ऐसा क्यों किया, तो कई बार हमें लगता है ये क्वेश्चन ने बहुत यूनिकली पूछा है, हमने पहली बार पूछा है, बट व्हेन यू रीड अबाउट इट आपको पता लगेगा बहुत लोगों ने हमसे पहले लिखा हुआ है उसके बारे में। तो समटाइम्स यू फाइंड योर आंसर्स देयर ओनली एंड देन यू फील लाइक मैंने ये रिसर्च शुरू ही क्यों की थी जबकि जबकि इसका आंसर हो चुका है। But on the other side, when you do the literature review, when you read, when you literature review क्या होता है, उस टॉपिक पे लिखी हुई बुक्स, आर्टिकल्स और स्कॉलर आर्टिकल्स की बात कर रही हूँ मैं, ये वन पेज वाले जो एवरीडे आर्टिकल्स होते हैं उसकी बात नहीं कर रही, जो स्कॉलरली पीसेस होते हैं जिनमें सॉलिड आर्ग्यूमेंट दिया होता है, फैक्ट्स दिए होते हैं, वो सब आप जब पढ़ते हो तो हर एक इंसान फैक्ट्स को अपने हिसाब से अपने देयर विल बी सर्टेन बायसेस इन एवरीवन्स वे ऑफ सीइंग इट, तो कैसे वो लिखता है। अब आपको लगता है कि उन्हीं फैक्ट्स को, फैक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव पीसेस होते हैं, ठीक है, उनको आप कैसे पिरोते हो फैक्ट्स को टू मेक अ थ्योरी, टू मेक एन आर्ग्यूमेंट, वो हर किसी का अपना तरीका होता है एंड यू विल रियलाइज दैट you do not agree to particular way of thinking. Maybe those same number of facts can have a different interpretation. So therefore then you find अरे ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हुई नहीं थी, या ये प्रॉब्लम को हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या आई कैन गिव एन ऑल्टरनेट आर्ग्यूमेंट ऑफ इट। So that is that requires literature review, and that is why you need to read a lot of books before you could actually identify the problem for your research. Then you build up a hypothesis. Hypothesis is actually one line statement where you try to tell कि इससे ये होता है, फॉर एग्जाम्पल, एंड आपको प्रूफ करना है इससे ये होता है कि नहीं होता है। मैं बहुत क्रूड वे में बता रही हूँ, मैं आपको कोई एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि देन यू कैन जस्ट पुट अप योर ओन आर्ग्यूमेंट इन दिस कि इससे ये होता है कि नहीं होता है, ये आपको हाइपोथेसिस में प्रूव करना है। टू ऑल्सो आप इससे शुरू करेंगे कि ए से बी होता है, एंड आप जब रिसर्च करते जाओगे टुवर्ड्स द एंड समझ में आएगा इससे ये होता है या नहीं होता है, टुवर्ड्स द एंड दैट इज योर कंक्लूजन। So that is how you go about working from your hypothesis to falsify, either agreeing to the hypothesis or falsifying your own hypothesis, which both are considered very good. Either you are able to either solidify your hypothesis or falsify your hypothesis. Both are considered good. So towards the end, of course, then you this is again next step is writing a research proposal, which is depending कि कहाँ आप लिख रहे हो, कई कई जगह रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं, कई जगह नहीं मांगते, डिपेंड। रिसर्च प्रपोजल बेसिकली आपको बताना होता है कि आपकी प्रॉब्लम क्यों है, आपने क्या प्रॉब्लम चूज की है सोल्यूशन के लिए, क्यों इम्पोर्टेंट है प्रॉब्लम, आप उसका कैसे सोल्यूशन निकालने वाले हैं, आपको क्या आर्ग्यूमेंट होने वाला है, वो आप बेसिकली प्रपोजल में इनिशिएट बता देते हो, ठीक है। अभी अगर इफ दैट इज नॉट द थिंग, नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज मेथोडोलॉजी, आप क्या यूज करते हैं, आप कैसे उस प्रॉब्लम को मतलब अटैक करोगे, सॉल्व कैसे करोगे। तो इसके बारे में भी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा बताऊंगी कैसे क्या क्या किया जाता है, क्या मेथड आप यूज करेंगे, बिकॉज रिसर्च हैज टू बी वेरी साइंटिफिक इन इट्स अप्रोच। आप किसी मतलब देन ओनली यू कैन से दैट आई हैव डन अ वेरी एम्पेरिकल काइंड ऑफ, एम्पेरिकल इज वेरी साइंटिफिक काइंड ऑफ अप्रोच, मतलब आप ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप जो भी आप बोल रहे हैं उसके पीछे कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ आइडिया है, कुछ आर्ग्यूमेंट है, इसलिए आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ बोल रहे हो, ठीक है। एंड फिर उस मेथोडोलॉजी के हिसाब से आप अपना डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा भले वो एक सोर्स का डेटा हो, भले मल्टीपल सोर्स का डेटा हो, डेटा कलेक्ट करते हो, फिर डेटा का एनालाइज करते हो, फिर आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन देते हो, एंड देन ट्राई टू मैच वेदर वट एवर यू कलेक्टेड दैट डेटा का इंटरप्रिटेशन मैचेज द इनिशियल हाइपोथेसिस और नॉट, and then जीमेल का पासवर्ड याद है? this is the basic idea how to go about any research, whether it's a small paper, whether it's a PhD thesis, whether it's your जीमेल का पासवर्ड याद है? 26 12 वाला। generally we talk about qualitative and quantitative data. As you know by the word quantitative is when you have when you deal with lot of numbers and statistics. तो जैसे कोई भी IR रिसर्च के लिए, डिफेंस स्ट्रैटेजिक स्टडीज के लिए आप बहुत सारी चीज़ों का इंटरव्यू लेते हो या बहुत सारी चीज़ों को का डेटा पॉइंट्स लेते हो, तो दैट रिसर्च विल come under the quantitative research. On the other hand, if you use certain concept, certain theories, certain to work around it कि भाई इसका क्या मतलब है,
इससे क्या प्रूव होता है, क्या डिस्प्रूव होता है, वेदर इट्स राइट और नॉट, that comes into a very qualitative kind of work. So both are applicable in different strategic studies. For example, अगर आप इंडिया में देखें कि अ, आपको फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव में चेक करना है कि कितने सारे मिलिट्री इंटरवेंशन क्या बोलते हैं JNK में हुए हैं अगेंस्ट टेररिज्म, फॉर एग्जांपल रफ तो आप फिर उस पर आप एरिया में सेलेक्ट करेंगे कितने एरियाज हैं, उसमें से कितने कितने अटैक्स हुए हैं, कितने कितने मिलिट्री इंटरवेंशन हुए हैं, उन मिलिट्री इंटरवेंशन का क्या रिजल्ट निकला है, दैट वुड बी अ क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च। सिमिलरली अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको इंडो पैसिफिक पे रिसर्च, अभी तो इंडो पैसिफिक पे, एंड वाई इंडो पैसिफिक इज अ बैड टॉपिक टू रिसर्च राइट नाउ, आई टेल यू दैट ऑल्सो, बट फॉर एग्जाम्पल कंसेप्ट पे काम करना है आपको, दैट विल कम इनटू qualitative kind of research, and which is also very interesting way of research. Okay, so why Indo-Pacific and current issues should not be taken for research, which I believe, and there are certain other scholars who believe, there are different interpretations, but जनरली ये बोला जाता है कि जो कौन करेगा? ऑनगोइंग इश्यूज होते हैं उनके ऊपर रिसर्च करना मुश्किल करेगी इसलिए होता है बिकॉज यू वॉन्ट पक्का, गेट इनफ लेकिन डेटा उसके पास बिफोर टाइम, लैपटॉप नहीं है। therefore your research should be बिना generally लैपटॉप के little नहीं bit होगा, dated, फोन से पॉसिबल नहीं होगा। मतलब जो थोड़ा सा खत्म हो चुका होता है, थोड़ा पहले हो चुका होता है, so स्मूथ that चलता उसके है ऊपर मैंने। मोस्टली आपको डेटा मिल जाएगा, मोस्टली आपको रीडिंग्स मिल जाएंगी एंड रिसर्च करना आसान होता है। सिमिलरली अगर आप किसी नई चीज़ पे डिटेल पढ़ना लिखना चाहते हैं, when I'm talking about research specifically, I'm not talking about analytical ठीक है, thesis फिर only, दो तीन दिन because analytical thesis तो आप करंट इवेंट से लिख सकते हो हम धीरे देंगे, धीरे, लेकिन बट अगर हम आपको उसको प्रॉपर पहले रिसर्च सीखने के लिए करनी है उसके बताएंगे लिए आज ही बहुत बात। डेटा चाहिए होता है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होते हैं प्रेजेंट करने के लिए, so it is always advisable that it should be little dated. Okay. Now, we also talk about what are variables. So basically, variables is what impacts them. So there are independent variables अरे and ऐसा कुछ dependent नहीं, कहा डरा variables. का है। अभी क्या होता है रिसर्च में हम लोग हमेशा वी यूज पार्सिमनी, पार्सिमनी मतलब जितना ज़्यादा आप उसको सिंप्लीफाई कर सको, जितने कम वेरिएबल्स ले सको उस रिसर्च में उतना बेटर होता है अपने हाइपोथेसिस में, अपने क्वेश्चन में, बिकॉज अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ प्रूव करने जाओगे तो आप कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगे, आपका रिसर्च सब गड़बड़ हो जाएगा। तो बेसिकली हम ट्राई करते हैं रिड्यूस करते 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 कि हमारा वन लाइन क्वेश्चन बन जाए while doing the क्या बोलते हैं रिसर्च। जैसे मैंने डिपेंडेंट के लिए दिखा है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं जिसमें एक फैक्टर दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ ले लिया, मैंने यहाँ पे लिखा है द इंक्रीज मिलिट्री इंटरवेंशन लेड टू डिक्रीज इन टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया, फॉर एग्जांपल। सो क्या हुआ, जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो डिपेंडेंट हो गए मिलिट्री इंटरवेंशन पे। सो वन फैक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन अदर फैक्टर। अब इस पे आप रिसर्च कर सकते हो कि वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, वेदर एक्चुअली मिलिट्री इंटरवेंशन से टेररिस्ट अटैक कम हुए या नहीं हुए। सिमिलरली देयर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिसमें ए का कोई बी पे इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे सिमिलर अगर हम हाइपोथेसिस बना दें कि पॉलिटिकल लीडरशिप लेड टू political decision making या judicial decision making in India led to decrease terrorist attack. Very bad hypothesis I'm here just giving, but just for the example. So there is more or less no relation between judicial you know क्या बोलते हैं decisions and terrorist attacks, more or less. But you can do a research on that also and show actually there is no relation, or maybe you in the end while the research you actually come with a new knowledge कि हाँ कि पर्टिकुलर ईयर में इतने थे कोर्ट डिसीजंस आए थे जिसका एक्चुअली हमारे टेररिस्ट जिससे हमारा क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट हुआ या बेटर हुआ, एंड बिकॉज ऑफ विच टेररिस्ट अटैक्स एक्चुअली रिड्यूस। So these are two ways of proving it, and one is called intervening variable, which is basically if there is another third factor which actually intervenes between dependent and independent variable, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसका जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्ड से जो उसमें जो किसी चीज पे डिपेंडेंट। दीज आर द okay, this was a basic idea about research. If when you do go ahead with your research, I think then we can talk more about it.
because of the paucity of time, I'll quickly tell you about some of the writing tips which I just thought it is very necessary, which everyone should understand if you want to join this field of defense strategic studies. That uh, in this writing skill is must. You have to know, you have to write well, but at the same time, only very few people are gifted writers. At least I can tell about myself. I wasn't a gifted writer. I still struggle when I write because this is not this is a I am learning every day. This is a learnable skill. So therefore, the only way you can do better in this field is when you तुम्हारा practice a फोन फ्री lot. है क्या? You write, तुम्हारा फोन write and write and write. You will do mistakes. You फ्री will write नहीं? again. So it requires a lot of तो उसको कंटिन्यू रिवाइज कर perseverance in सकते हैं? that term. हाँ? एंड रिवाइज ऑल्सो कर सकते हैं? इसका कुछ दूसरा कर सकता तरीका है सुन के। हाँ सॉल्व और करने क्या? का ये है कि व्हेन यू रीड यार छोड़ो तुम अदर्स, हमको आप लोगों के खुद के डॉक्टर्स और राइटर्स होंगे, और तो आप आइडिया उनको आता है देखोगे, आपको समझ में आएगा देखो that दूसरा it's भी a कर particular way the particular person writes about making an बहुत तेजी argument. से कम हो रहा है यार चाट You can चाट copy रही है them यार and copy them till the time you have your own क्या एक style घंटा of साथ हो writing, गया यार which is इसको खत्म another, करना चाहिए क्वेश्चन fake it पूछे till you make it. So basically you just try and fake other अच्छा people's स्टाइल्स कि वो कॉग्निटो इस मोड का तरीके से है इसमें लिखता है और बहुत जार्गोनिस्टिक लिखता है। अगर आपको पसंद है कि बहुत सारे मतलब बड़े-बड़े वर्ड्स थ्रो करके आप ऐसे लिख सकते हो। हाँ, अगर आपको लगता है ये बहुत सिंपल एवरीडे राइटिंग है, अरे यार तुमने जस्ट लैपटॉप राइट में नहीं एज़ कर यू सकते ना स्पीक, ये तो रिकॉर्ड आपका हो रहा कंसेप्ट है होता है कि तो फिर दो जैसे दो आप आवाज बोलते हो आएगा वैसे ना लिखना म्यूट चाहिए, नहीं आप तो वैसे म्यूट लिख करना इसमें सकते तो हो। हम म्यूट व्हाटएवर किए हुए हैं आइडिया सूट्स यू, यू कैन डू दैट। डायरेक्ट बट कंप्यूटर यू से ही हैव टू म्यूट किए रीड हुए अ लॉट हैं एक बिफोर साथ यू सब राइट। राइट इस फील्ड इसमें में सेशन या रिकॉर्ड हो डिफेंस रहा है स्टडीज में यू जस्ट जैसे ये कैन जो है ना नॉट ये गो रिकॉर्डिंग इनटू यूट्यूब पे claims डालना without any substantial backup. You have to क्या back whatever मेरे को you इसी में say. बताओ ना So therefore, you have to read a lot सेव and पासवर्ड नहीं have आया your देख लिया solid था facts before you वो start याद talking नहीं or writing. कौन सा And अकाउंट another tip of डेविल how लॉक्स to 216 become a वाला better writer in research area is active reading. What is active reading? Is when you read, don't just go on reading. Okay, I'm गूगल sure है a क्या lot of few people are not already doing it, but maybe you not don't know the term. Active reading is when you read something, you immediately get और some क्या हो certain गया questions in your head or certain arguments in your head. Keep writing next to it. Maybe if you don't write on a book, maybe write somewhere else. But what I generally do is I हाँ always सही have है a pencil with me उसमें and I थोड़ा will एम write next स्मॉल to है it, वो छोटी सी जगह होती है उस पे माँ पिताजी ऐसा क्यों बोला या मुझे इस चीज क्वेश्चन मार्क पर यू कैन गौरव कुमार प्रॉब्लम सम वन इज पार्टिसिपेट्स इन द आस्किंग, आप कॉल किसी का आर्टिकल पढ़ रहे हो, आपने हाँ न्यूज़पेपर में अंडरलाइन किया, क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि इसी इसे में ऐसा क्यों बोला है। केशव सिंह This पार्टिसिपेट्स kind है of वो concept is दोनों एक active साथ reading, where you are reading but also thinking at the same time, which also helps you to build better writing skills. Uh, Also remember that when you write, first draft is always bad for everyone. चाहे आप छोटा piece लिखें, big piece लिखें, it is bad for everyone. But you have always will have to edit and more edit. Uh, it is a very painful process. The entire process of editing and proofreading is a painful हाँ process, but it is very much क्या required for the process of writing. ना ना छोड़ दो अरे Another हम issue अपना I would साफ want करेंगे तो to निकलेगा ना very गटर रहने clearly दो flag you here is no plagiarism or copying others. Because हमेशा पकड़े जाते हैं हम लोगों को लगता है कि हम किसी का आर्ग्यूमेंट लेके बस हमारे इसमें लिख देंगे, किसी का रिसर्च को पता किसी को नहीं चलेगा. But this is always caught because people in your field will read those people also whom you are quoting. They will always have. उसका तरीका ये होता है whenever you are using somebody's argument, तो उसको हमेशा या तो डबल कोट कर दो, बता दो कि भैया ये हमारा आर्ग्यूमेंट नहीं, किसी पर्टिकुलर बंदा है. ऑल्सो दैट इज द रीजन वी डू द साइटेशंस नीचे. साइटेशंस हर एक यूनिवर्सिटी का और बुक्स का हर एक जर्नल का अलग अलग तरीका होता है, बट साइटेशन का मतलब यही होता है कि मैंने इस बंदे का आर्ग्यूमेंट आइडिया या फैक्ट इस बंदे का लिया है, इस बुक से लिया है, इस सोर्स से लिया है, एंड यू ऑलवेज साइटेड दैट, सो दैट अवॉइड्स प्लेजरिज्म एंड ऑल्सो इट गिव्स यू क्रेडिबिलिटी एज ए राइटर कि आपने उतना पढ़ा है उस अपने एरिया में that you are able to cite others, which is a good thing. Last दो तीन छोटे छोटे points ये हैं that whenever you write, try to make your write in your own words, which makes your argument very convincing because people will know it's your style of writing, and it requires patience. मतलब आप जितना जितना लिखोगे उतना better होगे. Every day you will keep reading more, keep writing more. So with this, I think I come to an end to my presentation, um, and I would be happy to take any questions if we have now.
I think I just went too much ahead of time. Hello. Yes, ma'am, you're audible. Yeah, yeah. So I think I'm above time. So if you have any other questions or any doubts to be cleared, I can clear it next 5-10 minutes if you want. Those who have question can ask or can type in the chat box. Okay. You have in the um, I don't think we Hello. have question types yet. हेलो मैम। Yes. माय नेम इज़ पृथ्वी सिंह और मेरा क्वेश्चन ये है कि डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में अभी मैं फ़िलहाल एमएससी कर रहा हूँ। तो आगे अगर किसी टॉपिक पे रिसर्च करना हो तो कौन सा मतलब टॉपिक मतलब ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें रिसर्च किया जा सकता है और जो बेटर होगा रिसर्च के लिए। सी वेनेवर यू जब भी हम किसी एरिया पे काम करना चाहते हैं, सबसे पहले ये देखने के बजाय कि कौन सा टॉपिक अभी रेलेवेंट है, उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है आपका किस में इंटरेस्ट है। आप फॉर एग्जांपल मे बी आपका इंटरेस्ट मिलिट्री इश्यूज में ज़्यादा है, आपका इंटरेस्ट न्यूक्लियर इश्यूज में ज़्यादा है, आपका इंटरेस्ट एरिया स्टडीज़ में ज़्यादा है, मतलब दूसरे कंट्री से इंडिया के डिफेंस रिलेशंस क्या है, जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है, आई थिंक दैट शुड बी योर बेसिस ऑफ हाउ यू शुड बी चूजिंग अ रिसर्च टॉपिक रादर दैन सीइंग कि कौन सा टॉपिक अभी हॉट चल रहा है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी अफगानिस्तान इज द टॉपिक तो अफगानिस्तान सारे अफगानिस्तान पे रिसर्च करें, इससे पहले इंडो पैसिफिक वाज द टॉपिक, सब इंडो पैसिफिक पे करें। दैट इज नॉट द वे, बिकॉज इफ इट इज नॉट समथिंग दैट इंटरेस्ट यू, आप विद इन फ्यू डेज बहुत जल्दी बोर हो जाओगे एंड यू क्विट इट। So don't think that which topic is relevant, but see what interests you after यस reading. मैम। मैम मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर में है, Hmm. तो लेकिन ये एक तरीके से आउटडेटेड टॉपिक जैसा हो गया है, तो क्या इसको लेने लेकर कुछ रिसर्च करना बेटर रहेगा, क्योंकि ये लगभग इस पे तो सारा काम हो ही चुका है, तो फिर इस पे क्या नया कर सकते हैं। Basically, now guerrilla warfare basically क्या था? It was a type of unconventional warfare. So now we have the same warfare coming in different ways. So now you can see actually, and now there's a new concept called gray zone warfare. ठीक है, तो अभी आप ये देख सकते हो कि वेदर ग्रे जोन वॉरफेयर में गुरिया वॉरफेयर कैन बी अ टॉपिक टू स्टडी। क्या गुरिया वॉरफेयर हैज वेदर गुरिया वॉरफेयर हैज taken place of new kind of gray zone warfare, that kind of thing. Basically concepts change हो रहे हैं, नाम change हो रहे हैं, but more or less strategy वही है। guerrilla warfare क्या था? When you don't want to have a full-fledged war, you will send a few of those trained people. Most of them are either ex-civil, most of them are civilians or ex-armed forces to do the similar activities. Now, even gray zone warfare has a similar concept. So now you can try and relate those क्योंकि ये दोनों चीजें क्या comparable हैं? If there are any commonalities to it, are there any differences to it? I think that should be a very good area to research. ओके, थैंक यू। Um, do you have any more questions about research, about different strategic studies? I think we have a suggestion by one of the attendees here, Ajay Singh, and I think organizer might like to take a look to it. Ajay, And that's Ajay, yeah, I would like to answer to Ajay. या We have our common group. We have a WhatsApp group, ओके and ओके I'll send you the link, and you can be a ओके part of it. yeah. ओके, थैंक यू सो मच। So basically, the research collaboration is doing the same thing that you're asking. You can join them and we can discuss there. They keep doing events such as these, so that should be helpful for you. Uh, So I any think questions? we don't have any more questions, ma'am. All So right, great. yeah. So Hello, ma'am. Uh,
Yes, yes. Is it Nitish? यस मैम। मैम, इंटरनल सिक्योरिटी पे भी इसमें रिसर्च हो सकता है क्या, जैसे माओइज्म पे, बिल्कुल, नक्सलिज्म? बिल्कुल। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिफेंस स्ट्रैटेजिक स्टडीज। जो डिफेंस स्ट्रैटेजिक में आपका इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज भी आते हैं और इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज भी आते हैं। आप उस पर भी रिसर्च कर सकते ओके, थैंक्स मैम। हैं। We have a question here in the chat box. I've always heard criticism about IR research or defense research. Is it research? It is mostly secondary data based, like you. Okay, now this is a very good question. I think this is one point I did not mention and I should mention it right now. Research should not be secondary source based. Primary secondary sources क्या होते हैं उससे पहले मैं बता देती हूँ. Primary sources are basically जो statements and arguments direct from the source आते हैं. जैसे किसी लीडर ने कुछ बोला उसका statement direct जो आता है, जो क्या बोलते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ स्टेटमेंट निकाला है वो, सो डायरेक्टली वो पढ़ना हमेशा बेटर होता है. दोज आर द प्राइमरी रिसोर्सेज दैट यू रीड. इन टर्म्स ऑफ दैट न्यूज़पेपर आर आल्सो कंसिडर्ड प्राइमरी रिसोर्स बिकॉज वो सीधा वो बताते हैं जो किसी ने बोला है या लिखा है. तो आप उनको रेफर करके रिसर्च हमेशा करनी चाहिए. सेकेंडरी सोर्सेज आर बेसिकली किसी का एनालिसिस होता है, किसी की लिखी हुई बुक होती है तो उसमें थोड़ा बायस आता है. तो उसको आप पढ़ सकते हैं जस्ट टू गेट अ सेकेंडरी alternate व्यू फॉर योर रिसर्च टॉपिक. बट whenever you do research, try to use primary resources as much as possible to get exact fact कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. And when you do that, your research would be more credible. So to say that IR research is not credible would be wrong, because we try and look for all these, archives in defense strategic and IR related issues. उन archives में actually original statements दिए होते हैं, सब दिया होता है, and we use that to research. And whenever you do research from that, that will be always authentic. So if people tell you that this research is not authentic, is not correct. I hope I answered your question, Vaibhav. If you don't have any question, then I think we had a good session and we can. Ma'am, I do want to ask one thing. Yes. Can you elaborate various fields where we can pursue our research in Mm-hmm. maritime security? Because means lots of this is an emerging field, and Absolutely. lots of scholars want to do research in this field, Hmm. and but they are really confused, like what to do in maritime security, Indian Ocean or Pacific or Indo-Pacific regions. Can you elaborate a So, bit? yeah. So thank you for the question. It's a very good question, and also that maritime studies is understudied topic in India, at least till now, and now it is gaining importance. So there are some there are universities across India where now there is a separate school, a separate course for maritime studies, and you can check it online. A lot of schools are there, and mostly all these schools are located on the coast. RRU has, I think Mumbai University recently started something. Pondicherry has, I think I will even check it. And वहाँ पे आपको very you are taught maritime specific issues and topics, to work on. India का क्या है that for us the primary area of interest is Indian Ocean and then Indo-Pacific, which goes beyond Indian Ocean. तो उसमें कई टाइप के इश्यूज हैं. उसमें मैरिटाइम लीगल इश्यूज भी आते हैं, उसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी आते हैं, उसमें गवर्नेंस इश्यूज भी आते हैं, उसमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं. देयर आर wide number of areas where Indian scholars can work, and they haven't, because हमें वो अभी तक opportunity नहीं थी, तो हमें पता नहीं था ये एरिया होता है. But if you go on the website and see, you will realize that huge scope of maritime related topics where you can go in the maritime security governance. Shubham, was that a question or something I missed? No, no, ma'am. This was exactly what I wanted to ask. And also, ma'am, So, I think we can conduct another lecture on maritime security and scopes and what we can do to pursue this as a field and yeah, to do a I good think we can research. do. That's a good idea. We can Yeah. do a separate lecture for that, because that would require different set Yes. of lecture, and it is again time consuming. So Yes, ma'am. Yes. people who are interested can join that. Yeah.
So So I'm done, Shivam. Thank you. yeah, do anyone wants to ask something? I think, ma'am, everyone is satisfied and they don't have any more questions. So thank you, Pooja, ma'am, for bringing this fruitful session, and thank you everyone to participate in this. And I also thank the research collaboration platform for hosting such events, and we will continue to host such events in the future. Thank you, everyone. Thank you. Thank you for having me, Shivam, and Research Collaboration. Thank you, everyone who were attending today. Thank you, ma'am. Good Thank you. evening, everyone. Thank Bye-bye. you.